So, hello guys, कैसा आप सब लोग? वेलकम टू द ब्रांड न्यू एपिसोड एंड रेडी हो जाओ क्योंकि आज एक बार फिर से हम लोग जा रहे हैं हॉगवर्ट्स लेगेसी, जादू और जादूगर की दुनिया में। एंड जैसा कि आप लोगों को पता ही है, एक बार रिकैप कर लेते हैं लास्ट एपिसोड में। तो लास्ट एपिसोड में भाई हमने फाइनली सीख ली थी फ्लाइंग कैसे करते हैं और अपनी खुद की ब्रूमस्टिक ले ली थी जो पीछे टंगी हुई है भाई। वो बड़े से भैंसा नहीं मीन्स एक पेग या सुअर के नीचे जो है ब्रूमस्टिक, वो वाली ब्रूमस्टिक हमने ले ली थी। एंड उससे काफ़ी ज़्यादा फ्लाई भी किया और लोगों की थोड़ी सी मदद भी की मैंने। थोड़े से पोर्शंस डिलीवर करने थे तो उसमें मदद की। एंड इसके साथ हमने प्रोफेसर बिजली के साथ बात कर उन्होंने मिलने बोला था कि तुम्हारे स्टडीज़ के लिए तुम्हें एक बिट ऑफ प्रिटी प्लेस चाहिए होगी। तो मुझे पता है जहाँ पे एक जगह है जहाँ पे तुम्हें वाइट दूसरों से अलग जगह है, वहाँ पे तुम अपना खुद का पोटिंग टेबल वगैरह लगा सकते हो। और वो है रूम ऑफ रिक्वायरमेंट यानी ज़रूरती कमरा। तो कल के एपिसोड में हमने ज़रूरती कमरा ढूंढ लिया था और उसको डेकोरेट एंड मॉडिफाई करने में मैंने पूरा का पूरा एपिसोड ही यूज़ कर दिया था। मीन्स पूरा का पूरा एपिसोड हमने सिर्फ डेकोरेशन और अपने ज़रूरती कमरे को पूरी तरह से सेट आउट करने में लगा दिया था। एंड आज हम लोग जा रहे हैं कुछ नए स्पेल्स और पोशंस क्राफ्ट करेंगे। स्पेल्स नहीं बनाया सीखेंगे एंड थोड़े से मेन स्टोरी के मिशंस में जाएंगे अगर मुझे टाइम मिला, पर साइड स्टफ आज ज़्यादा होगा। तो बी रेडी एंड लेट्स स्टार्ट अवर गेम। और मैंने थोड़ा सा ऑफ गेम बैठ के थोड़ा सा ही लिटिल बिट ऑफ डेकोरेट किया है, न्यू चीज़ें मिली थी। तो यहाँ पे ये मैट देख रहे हो और लैंप्स है, ये हमने दो दो महीने लगा दिए थे। ये फ्लावर पॉट्स कुछ नए मिले थे और मैंने नए यहाँ पे प्लांट्स लगा दिए। मॉन्सूक एंड मेलो स्वीट्स यहाँ पे लगा है ताकि मुझे अच्छे से मिले। फिर यहाँ से भी थोड़ा सा चीज़ें निकाल दी है, थोड़ी चीज़ें निकाल दी है और थोड़ी लगी हुई रखी है। ज़्यादा वो बिट ऑफ हाई हो जाता है इसलिए। हाई ब्रो। एंड मेरे पास देखो, मैं विगल में पोर्शन काफ़ी सारे बना सकता हूँ। मेरे पास उसका नहीं है, हॉलप्लम जूस एंड डेंटी लीव्स काफ़ी में है। मैं थंडर ब्रू नहीं बना सकता, ना ही फ्लेक्सियो। मैं एड्यूरस बना सकता हूँ एंड मैक्सिमस, तीनों काफ़ी सारे मटेरियल्स है। स्पाइडर फैंग्स काफ़ी है और मॉन्डरिंग क्यूब्स भी काफ़ी ज़्यादा है, वो मैं लेता रहता हूँ। मॉन्डरिंग क्यूब्स आराम से आ जाएंगे। फिर एस्वाइंट एग्स भी मुझे मिल जाते हैं तो वो भी मैं ढूंढ लेता हूँ, उससे थोड़े से तो मिल जाते हैं। एंड इसमें तो लीच जूस भी आराम से मुझे नदी किनारे मिल जाते हैं तो वो भी हो गया। और स्पाइडर फैंग्स भी मिल जाते हैं तो वो भी है। और इसके लिए मुझे जो चाहिए ट्रोल बॉडीज वो करीब एक ही है, इसलिए ज़्यादा मैंने रखा नहीं है, इसका मैंने बनाया ही नहीं है। और बाकी का तो देख लो, आज पैसे होंगे तो मैं लास्ट पोर्शन रेसिपी भी लाऊंगा और मिला तो देखेंगे हम लोग, ट्राई करेंगे। अगर हमें मिला तो मैं नया वोटिंग टेबल बड़ा वाला लेना है मुझे, 5 वाला मुझे ट्राई करना है, 2000 चाहिए उसके लिए। फिर इस साइड बिट ऑफ ये वाला टेबल ही था, मैंने अच्छे से सेट आउट किया है। पर ये देख लो भाई, ये पूरा डेकोरेटिव आइटम है, ये जोन पूरा मेरा डेकोरेशन से भरा होगा। अभी भी इसमें क्वाइट चीज़ें बची है जो मुझे लगानी है। ये मुझे 2 मिले थे, मैंने लगा दिए। मैंने कुछ पेंटिंग्स वगैरह कुछ पेजेस जोड़ने थे फील्ड गाइड के। फिर यहाँ पे मैंने सारे डेकोरेटिव आइटम्स रखी है जो मैंने अब तक फाइंड किए हो और उसके बेस्ड ऊपर ग्लोब्स है। और ये टेबल मैंने पुरानी पड़ी थी ऐसे ही रखी है। मैं इनको हटा के नई चीज़ें लगाऊंगा जब हमारे कौन से हमारे मीन्स सिटी में ग्रीम होम में हॉग्समीड में, सॉरी हॉग्समीड में वहाँ पे चीज़ें खुल जाएगी तब मैं वहाँ पे नई नई चीज़ें लगा दूंगा। वहाँ पे एक स्टोर है जहाँ पे आप लोगों को फर्नीचर वगैरह चीज़ें सारी मिल सकती है। सो वहाँ से मुझे मिल जाएगी सारी फर्नीचर की चीज़ें। एंड पहले हम लोग जाएंगे कॉन्फ्रेंको विद सेबेस्टियन, सेबेस्टियन से नहीं, मेन क्वीज है प्रोफेसर से। और हाँ, पहले डिफेंडो सीख लेते हैं। पोशन क्लास के बाहर ही सीधा, वहाँ से सीधा पोशन क्लास में मुझे जाना होगा। एंड प्रोफेसर
हेड ब्लैक ब्लैक प्रोफेसर ब्लैक से मुझे डेफियो सीखना है एंड वो काफ़ी डार्क आर्ट अगेंस्ट डिफेंस वाली स्पेल है, तो डिफेंसिव स्पेल मुझे सीखनी है नई वाली। यहाँ पे अब मैं बनाता नहीं हूँ ये मेरे पास इससे अच्छी है भाई, आप लोग आपसे तो काफ़ी अच्छी है और मैं नई वाली पोशन वाला ले रहा हूँ वैसे भी। Expelliarmus, Incendio, Depulso. Have you finished your assignments? हाँ I प्रोफेसर। finished the tasks, Professor. Well, well. I trust you are meticulous in your efforts. After all, shortcuts only ever lead to shortcomings. Yes, sir, of course. Good. Ordinarily, I'd say it's not my concern either way, but you... I want to make sure you're well prepared. Talent and resolve are a potent combination. It would be a shame to let that go to waste. Thank you, Professor. Don't let it go to your head. Now, let's see how you fare with Defindo. Wand at the ready. हाँ प्रोफेसर। Focus. Defindo can be dangerous if you're not paying attention. डिफेंडो भाई, ये पहला अटैक्टिव आ जाएगा रेड में, अटैक्टिव आ Very गया। good. It seems you have a grasp on Defindo. तो आया है तो Defendo, It's a pleasure to have a Expelliarmus, Incendio, Depulso. भाई डिफेंडो इज लाइक quite danger. Incendio, Depulso. Expelliarmus. Defendo. As I mentioned earlier, Defindo can be versatile but dangerous. Good to see you continuing to practice. Thank you, Professor. Professor Sharp, do you have a moment? Depends on how you intend to use it. I saw an aura badge on your desk and was wondering if you could tell me more about your time as an aura. Observant. I suppose I could indulge you for a moment. Spent years tracking down reprobates who dealt in artifacts of dark magic origin. That seems a bit more dangerous than teaching potions. Often, yes. Though I've seen some remarkably creative concoctions brewed in my class. I enjoyed a great deal of success as an aura. However, success can make one complacent if one's confidence is not tempered by humility. One overstep in battle changed everything. May I ask what happened? Yes, well, I suppose it's a matter of record. My partner and I had tracked a suspect to a harbor in Scarborough, trying to smuggle shrunken heads of all things. I had deduced that he was working alone. I was mistaken, and they knew we were coming. From the moment we stepped onto the ship, well, I barely escaped with my life. My partner wasn't so lucky. I suppose being an aura is dreadfully dangerous. I'm sorry. It is at that. But survival is not guaranteed for any of us. Pay attention. And not just within my class. This is what I must impress upon you all. A potion and a poison may be a mere breath apart, until you consume the wrong one. Well said, Professor. Okay. So, Professor, इससे पहले एक अरोरा थे, एक तरह से यहाँ की जादू पुलिस डिटेक्टिव समझ लो, जो काफ़ी अच्छे का थे एंड एक मिशन के दौरान इनके ये भी घायल हुए और इनके बैरली बच पाए। मिशन में इनको शिप पे जाना था, पर उन लोगों को पता था ये आ रहे हैं और बैरली दोनों जब कर रहे थे तब इनके पार्टनर नहीं बच पाए। शिप पे आते ही टर्म लव और इनके पार्टनर की डेथ हो गई और ये बाल बाल बच पाए। ये बच भी नहीं पाए और कुछ कर भी नहीं पाए। अब मुझे लॉक वाला यार कैसे भी लास्ट है, लॉक वाला एक दे दो ना तो मजा ही आ जाए। Revelio. यार क्वाइट अनोइंग लगता है, लॉक वाला नहीं है ना आपके पास। कार्ट मुझे खोलना है, टोकन चलो
फ्लाइट टेस्ट का देखते हैं, पर कार्ड का भी मैं देख लेता हूँ। अब हमने नया कुछ अनलॉक किया ही है, तो इनकी कार्ड कहाँ पे है, जो सामान है कहाँ पे कौन है। हाँ, मैं फास्ट ट्रैवल कर रहा हूँ नज़दीकी पॉइंट पे, वहाँ से फ्लाई करके सीधा जाएंगे और अटैक करेंगे और देखेंगे क्या है। क्योंकि कुछ गॉब्लिन्स वो कह रहे थे, कुछ गॉब्लिन्स उन्हें परेशान कर रहे हैं। लास्ट एपिसोड में उन्होंने कहा था, तब से मैं बैठा हूँ, मैंने कुछ किया नहीं। मैं साइड स्टोर वैसे वाले ज़्यादातर करता नहीं हूँ, थोड़े से एपिसोड के लिए बचा के रखता हूँ। Revelio. Depulso. Defender. ये दे दो। भाई अब तो आसान हो गया है बहुत ही, देख लो आप। ये क्वाइट स्पीड में चलता है, इसलिए मज़ा ही आ जाता है। पर मैं ज़्यादा दूंगा नहीं कि ये मुझे डेंजरस भी साबित हो सकता है। मीन्स एनिमी के नज़दीक मत जाओ, प्रॉब्लम बढ़ सकती है। और हाँ, Looks as if there's more than one way to enter. पूरा कैंप ही बनाया है। ओ माय गॉड, यहाँ नए वाले भी है। चलो, नई स्किल्स में आजमाने का टाइम आ चुका है। एक काम करो, ये रखो। I have a brother who works in Gringotts. Couldn't pay me. डिफेंस You're at a वाला desk all day. Arn will regret not joining us. If he doesn't come Hit a round ranger now, with he'll be made Stupefy. even more of an Launch example. a burning enemy into another enemy with Should have repulsor. killed that traitor arm when we took his car. You ought to cut back on putting Revelio. हो जाए। I was only following orders. Leave your accusations in someone else's direction if you don't mind. Over here! Oh. That's it. I shall avenge your death. You won't get away with that. Protego. How many of you are there? One less human to worry about. I shall avenge your death. Defendo. Rock won't be stopped. Incendio. That's meant for me. Was that your best? I know I heard something. If only Sweat Rock were here. Defendo. Incendio. Depulso. I shall avenge your death. Protego.
going to give up. I shall avenge your death. You won't survive this, mate. Repulsor. Always on the defensive. You think you're so selfish. आरे चला गया. That's the stupid. Incendio. Repulsor. That was quite something. Oh, Now, dangerous to भी free था Orm's and cards. थोड़ा सा normal भी था. Revelio. Accio. Revelio. क्या आराम से मार सकते हैं. Quite an enchantment. The carts are returning to Arm. हाँ चलो कार्ड्स अपने आप ही जा रही है. ये बेटर हो गया. अटक गया अटक गया अटक गया. Revelio. Don't see myself doing this sort of वो दोनों अभी भी ये सोच रहे होंगे वहाँ पे क्या है. worked out one day. All working for me. कितने हैं दो Accio. Levioso. Repulsor. अंटिल यहाँ पे ना डालो. चार यहाँ पे चार वहाँ ऊपर. Accio. Revelio. ओके वहाँ पे भी है कुछ. Accio. चार ऐसे और Revelio. Accio. Not so tricky after all, Merlin. Revelio. ये मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है. ये यहाँ पे दिया पर क्या करूँ मैं. लू कैसे. Never seen a sword like it. Repulsor. कार्ड्स तो अपने आप ही रिटर्न कर रही है इसलिए उसमें मुझे खर्च करने जैसा नहीं. मर्लिन ट्रायल भी खत्म हो गया एंड अब ये दोनों बचे हैं. Fall dead asleep on my feet, I could. Levioso. Put me down! Incendio.
Depulso. Defender. Expelliarmus. I will make you. Protego. Incendio. Depulso. मैं ऊपर मैंने फिंगर काफी ऊपर चली गई मेरी कीबोर्ड में F2 के लिए ये चीज़ राउंड्स व्हील बोर्ड चेंज होता है F2 F1 F2 F3 4 से और बाकियों के लिए मुझे बहुत ही अलग अलग बता है इसमें Revelio. I won't rest until you're Revelio. dead. Defender. Revelio. फास्ट ट्रैवल का भी है तो आप कर ही लेते हैं blue flames located goblins का एरिया आ चुका है Revelio. दूसरा तो नहीं है मैं ये मशरूम काफी ज्यादा है अब सीधा मैं बाकी कुछ है तो नहीं ये नज़दीक में ही है तो उनको बताते हुए चलते हैं और ये ट्रेजर्स वाली चीज़ होती है ट्रेजर्स भाई बहुत ही ज़्यादा मेरा लेवल काफ़ी ज़्यादा 20 हो चुका है इसलिए शायद पता नहीं तो मैं साइड में करता रहता हूँ वीडियो होता हूँ तब एक्सप्लोर करता हूँ रूट लेन्स अनलॉक कर लूँगा और देखता हूँ ताकि फास्ट ट्रैवलिंग के लिए मज़ा आए एपिसोड में वैसे ब्रूम स्टिक का तो बहुत मज़ा आएगा एक्चुअली में ब्रूम स्टिक पे ज़्यादा मज़ा आएगा If you're here for my wares, I'm afraid I still don't have my carts. On, I have good news. Your carts are on their way back. I don't know what to say. Any hope I have of getting my belongings back was quickly fading. Ramrock's lot called me a fool for believing in the good in wizard kind. Thank you for proving them wrong. I managed to free your carts fairly easily. Oh, I'm glad you're all right. Oh, I can't wait to have my things back, especially my paints. You know, you've inspired me. I've been dealing with witches and wizards for years, and we've always got along just fine. Perhaps my next piece will be a tribute to all that is good between us. Sound wonderful, bye. What a nice idea, On. I wish you luck with it. Oh, I can't wait to get started. Thank you again for all you've done. बड़ी आपके लिए तो भाई कुछ भी थैंक यू फॉर यार कैप अच्छी कैप है ये भाई ये लॉक वाला मुझे सीखना है कोई लॉक वाला सीखना तो ये आउल नहीं ये से भी होता है डैंडलाइन एंड लाइट टेस्ट मीन्स मेरी झाड़ू को अपग्रेड करना कंट्रोलिंग स्पीड 3 अपग्रेड हो सकते हैं तो मैं 3 बार यहाँ पे इसके पास जाके मुझे देखना होगा बिट मोर में इसकी स्पीड अपग्रेड कर पाऊँ तो मज़ा आ जाए
और इसके लुक्स में भी शायद चेंज हो सकता है, ऐसा मैंने देखा है। और भाई सब इसमें और भी दो माउंटेबल थिंग्स है, दो एनिमल्स है माउंटेबल, मैं कहूँगा नहीं। आपने अगर हैरी पॉटर मूवी देखी है और गेम का ट्रेलर देखा है तो आई थिंक यू नो। ये एक क्विडिच का क्लब है, ये लोग सिखाते हैं, और ये Imelda Reyes? इमल्डा Albie Weeks sent me. Did he now? Still tinkering with his broom upgrade, no doubt. I tried to help him once. He nitpicked my flying technique, and that was the end of that. The nerve. Why is he roping you into his broom testing silliness? You've barely started flying from what I know. Caught wind of you showing off in flying class with Clopton. I don't know what people have said, but I certainly wasn't showing off. Tell that to the rest of the school. But it doesn't matter. Everyone knows that class is only for beginners, troublemakers, and bumbling baboons. But for some reason, now people think you're competition. I can't be having that. Perhaps I am competition. You're not even Slytherin. Could be a useless squib for all I know. Enough of this. Only one way to find out who's the better flyer. I hold one of the fastest times on this course. Let's see if you can beat it. Slytherin versus Gryffindor. Actually, why not? I can beat your record. I'm so looking forward to seeing you lose. Brilliant. Made it. बस मैं हेडफोन स्टिक कर रहा हूँ। Did it. Brilliant. Success. Now that's more like it. एक मिनट और 40 सेकंड। Good. I've got this. अब हेडफोन स्टिक कर लेता हूँ भाई। हेडफोन मैं ठीक कर रहा था और स्टार्ट हो गया 3 सेकंड में। कोई बात नहीं, बट मैच फिर भी अच्छा गया। 1 मिनट और 40 सेकंड। That's not... You must have cheated, you... Ugh! Fine. You won. Don't think this is over. You can't determine skill from one single trial. Surely my win means something. You're not terrible, but you're still going to have to prove yourself if you want to earn my respect. Challenge accepted then. Perhaps you have what it takes after all. We shall see. But don't get your hopes up. The next course near Irondale offers a much tougher challenge. You can try to prepare by racing this course again. Just check in at the podium, where the leaderboard is. You can check your time and start the race. We'll see next time if your win here was more than just a fluke. Whilst on an errand for Albie Weeks. There you are. The Cross Wands duelist to beat. Down the podium. I suspect Mr. Weeks will be glad to hear how I fared. ओके, मैं 1 मिनट और 42 सेकंड सेकंड नंबर पे हूँ।
1 मिनट और 30 सेकंड, मुझे 1 मिनट और 20 सेकंड करने हैं। मुझे अपग्रेड चाहिए भाई। और भाई ये पीछे वाला आग में है या पता नहीं, पर और भी खतरनाक हो रहा है। और मिस्टर एलबी भाई, एलबी वीक्स मेरी काफ़ी हेल्प कर सकते हैं इस रिलेटेड चीज़ में। तो फटाफट उनके पास चलते हैं, लेट्स सी। एंड देखो मैं कैसे पहुंचता हूँ उनके पास। बाकी सब ठीक बस चल रहा है, बाकी सब ठीक बस चल रहा है, बाकी सब ठीक है ना यार। बस चल रहा है, बाकी सब ठीक बस चल रहा है, बाकी सब ठीक बस चल रहा है, बाकी सब ठीक बस चल रहा है, बाकी सब ठीक। Hogsmeade, here I come. And we are Oh, here. you're back! With something to report, I hope? Mr. Weeks, I was able to set a record on my broom. Incredible! Miss Ray's must have been shocked. Tell me, how was the broom? A little turbulent and it's wanting for a bit of speed, but it fared well enough. I will say that it tended to drift a bit to the left on certain turns. Heard a slight swoosh when I dipped. Oh, thank you. That's precisely what I needed to know. Drifted, eh? I shall get to work immediately. Even the naysayers will be forced to admit that my work's had potential all along. Why would anyone doubt your ability to upgrade brooms? No, you'd be surprised. People get set in their ways, worry that fiddling with what's working fine will somehow ruin it. Those people don't appreciate the sense of freedom that comes with quality broom flight, nor do they appreciate all that's involved in the creative process. I have a friend in Rome runs a shop like mine, says it's worse there. Of course, they do nap in the afternoons from what I hear. And where would we be without enhancements? I mean, if Elliot Smethwick had let the naysayers get to him, we would never have had the cushioning charm. I don't listen to them. I'm excited to hear more. I have a very good feeling about this upgrade. I guarantee you'll be pleased. Expect to hear from me soon. Okay. How to address the issue of altitude as it relates to speed? अब मैंने इनको प्रॉब्लम तो कह दिया, ये प्रॉब्लम सॉल्व करके खुद ही मुझे कह देंगे। फ्लाइट टेस्ट हो चुका है एंड थोड़ा सा रह गया। कोई और स्वाइप पीस तो इसके लिए मुझे 6 डेड एलियन की चाहिए और पता नहीं कहाँ पे मिलेगी। 6 डेड एलियन की मीन्स मुझे पूरे हॉगवर्ट्स में घूमना रहा पड़ा था है, और हॉगवर्ट्स में मैं इतना ज़्यादा घूमता नहीं हूँ, इसलिए साउथ विंग में है एक जगह पे। ग्रेट हॉल ले लो, डार्क आर्ट क्लासरूम में चलते हैं और वहीं पे सेबेस्टियन होगा शायद। सेबेस्टियन वहीं पे घूमता रहता है, डार्क आर्ट क्लास के आसपास ही घूमता है। डिफेंस अगेंस्ट डार्क आर्ट, तो फ्लेम पीली हथियार है और मोस्ट इम्पोर्टेंट काफ़ी टाइम पे हमें बचा सकती है। और जैसा कि मैंने अपग्रेड डाले वैसे, और 20 होते ही मैं अपग्रेड नेक्स्ट डालने की सोचूंगा। Revelio. ये रहा Over बेटा। here. Sebastian, it's been a while. It has. Glad you received my owl. I have something to show you. First, let me thank you for what you did in the library. Of course. Scribner tried to give me detention, but I have ways out of these things. Well, you took the fall for me, and that counts for something. Did you find what you were looking for? I did, but something was missing. I'm not sure here is the best place to discuss it. Understood.
We can talk more in a moment, in the Undercroft. Not even the professors know about this place. This way. There's a secret passage just here. It's well disguised. ओके, यहाँ पे सीक्रेट पैसेज है अंडरक्राफ्ट में घुसने का। How did you find this place? My friend, Ominous Gaunt. He named it the Undercroft. We used to play gobstones here all the time. With my sister, Anne. भाई ये भी एक loved तरह का that infernal ज़रूरी game. कमरा है पर बहुत ही awesome What वाला। I wouldn't give to lose to her again. Revelio. Tell you, I swore to Ominous I would safeguard this place. So please, keep this between us. He never confides in anyone. But he's trusted me since the day we met. I wouldn't want to jeopardize that. We used to sneak in here almost daily. We've never been caught. Depulso. Accio. I think I've seen Ominous in potions. Or was it herbology? I've noticed that he uses his wand to navigate the castle. He does. No idea how, though. Ominous was born blind, and no spell could reverse it. His wand seems almost sentient. Not surprising, I suppose. Ollivander always says, the wand chooses the wizard. Is that how he found this place? No, someone in his family knew about it. The Gaunts are full of secrets. I've never heard anyone else speak of it, and I've certainly never seen anyone else here. Again, mention this to no one, especially Ominous. He has no love lost for his family or their secrets, but this place is special to him. Understood. But why does Ominous have no love lost for his family? His father's family are direct descendants of Salazar Slytherin, one of the 4 founders of Hogwarts. Obsessed with blood status, most of them. Ominous cannot abide them, as he'll be the first to tell you. Anyway, the Undercroft has been a perfect place to sneak off to, away from prying eyes, and even practice otherwise forbidden spells. Really? Like what? Like the blasting curse. Professors say it's not an appropriate spell to teach students. A proper magical education ought to include all magic. My thoughts exactly. A spell like Confringo is only truly dangerous in untrained hands. Such spells should be properly taught, not banned. To be fair, I'm admittedly partial to more fiery forms of magic. But you should learn it. I can teach it to you safely here. ये मुझे कुछ It may take a सिखाएगा। while to get the feel for it. Mimic my wand movement. The incantation is Confringo. Very well. Confringo. बच गया, मैंने वहाँ पे गलत दबाया था। You're getting it. Ready to actually try it out? Stick to the targets, though. Best to keep the Undercroft intact. Have a go at those candelabras. Both have their uses, but I think you'll find that a Confringo... Nice work. That's it. I think I've got Well it. done. हाय साहब। Incendio. Depulso. Defendo. Confringo. ये तबाही मचा सकता है अगर ये स्पेल सिखानी कंट्रोल में होनी चाहिए, बैन तो होनी चाहिए। I have to say, I enjoyed that. The first time Ominous and I practiced Confringo, we singed our eyebrows. I would have paid to see that. I swore we'd never live it down. To this day, there's something about that spell that's addictive.
This is exactly the type of magic I've been hoping to learn. There's more where that came from. Been practicing similar spells here for ages. Although, I didn't tell Anne and Ominous about every one. Haven't been here in some time. It's not the same without Anne. I'm sorry about your sister. If there's anything I can do... Perhaps when I next head to Feldcroft, you could come along. Meet Anne. She could use some cheering up. Just let me know when and I'll meet you. Oh, she misses Hogwarts. She's been stuck at home with our guardian, Uncle Solomon. Unfortunately, you'll have to meet him too. Well, meeting a new student will be precisely what she needs. I shall look forward to it. Cheers. By the way, what was it you couldn't discuss out in the hall earlier? I'm not sure where to start. You said something was missing from what you found in the library. Might it have something to do with Victor Rookwood? He didn't mistake you for someone else at all in Hogsmeade, did he? Nothing gets past you. I'll tell you what I can. Rookwood and Ranrock are trying to recover something they think I took from a vault in Gringotts. Gringotts? When were you there? Professor Fig and I wound up there after the dragon attack. There was this port key that... A port key? To Gringotts? Well, it's all a bit convoluted. I'm listening. You must promise to keep this between us. I trusted you with knowledge of this secret undercroft. You can trust me. All right. I can see traces of ancient magic. Ancient magic? I don't know what I was expecting you to say, but it wasn't that. What does that even mean? Honestly, I'm not entirely certain. All I know is that I can see whispers of an old magic that hardly anyone else can. Fig and I think that Ranrock has somehow found a way to harness that magic's power. Are you telling me that goblins may be wielding some sort of wizard magic? That's what we're trying to find out. And this ability of yours, does it allow you to wield this magic too? I don't know. Well, when you do know, tell me. I've been studying archaic forms of magic for ages. Perhaps we can help each other. In the meantime, with both Rookwood and Ranrock after you, I suspect a bit more time practicing the blasting curse is in order. Spend as much time here as you'd like. And remember, keep this place between us. When I head to Feldcroft, I'll send you an owl. Okay, spellcraft नहीं ये सीखेगा तो मुझे बताएगा. कौन है? Hello, Sebastian. Wait. You there? I can hear you. Oh, hello. Ominous, isn't it? I believe we have potions together. And herbology? I recognize that voice. Heard you talking to Gareth Weasley in potions class. You're the new 5th year. Did you just come from the Undercroft? How did you get in there? That room's called the Undercroft. Ah, well, I was exploring and then suddenly found myself in a strange passageway. Don't lie to me. No one stumbles upon that room. Sebastian told you, didn't he? You breathe a word about this place to anyone, and not even your precious Professor Fig will be able to help you. My father is friends with the headmaster. I am not afraid to exploit that connection if I need to. Trust me, Ominous. I won't say a word. And Sebastian is a good friend. You shouldn't immediately assume the worst of him. I don't need you to tell me about my oldest friend. Thank you very much. Ominous, I just meant... I know what you meant. Sebastian gets himself in enough trouble. He doesn't need your help. Sebastian is going to get an earful about this. यार ये बाहर था, मैं बाहर निकला तभी. ये पहले से अंधा है और ये तब से स्पेल्स ये इनके फादर या उनके पहले के किसी ने सीखा है. उनकी फैमिली 4 हेडमास्टर्स है जो जिन्होंने स्कूल को बनाया, उनमें से ताल्लुकात रखी है, तो तब से ये लोग हैं. Come and see me as soon as you can. I've returned from a rather unproductive trip to the Ministry, hoping your time has been more fruitful than mine.
प्रोफेसर पिग आ गए, बड़ा ही अच्छा मौका है। प्रोफेसर पिग मेरी काफ़ी हेल्प करने की, और बाकी तो मैं अलग अलग मैजिक सीखता ही रहता हूँ, इसलिए मेरा फ़ायदा इसमें ज़्यादा है। I would like to teach you Wingardium Leviosa. It can be used to levitate objects for a short time. Once you've completed a few prerequisite tasks, do see me after. ओ ये रहा विंगार्डियम लेवियोसा। फ्लूट करने भी लगेगा थोड़े टाइम के लिए, और ऑब्जेक्ट्स का काफ़ी अलग अलग यूज़ भी कर सकता हूँ। तो आज सीखेंगे। मैं देखता हूँ, अगर पहले प्रोफेसर फिग के साथ बात करनी है। प्रोफेसर फिग फ्रॉम लेटर टू I फिग was फ्रॉम ब्लैक। hoping to see you. You're back. Finally. Minister Spavin talks more than he listens. Ranted on and on about rogue dragons. Wouldn't listen to a word about goblins. Speaking of which... Listen, Professor, so much happened while you were away. Nearly Headless Nick asked me to get some rotten roast beef from the kitchens. Rotten roast beef? Yes, I thought it was odd too. But then we took the roast beef to Sir Podmore of the Headless Hunt, and... You met the Headless Hunt? That must have been interesting, to say the... Yes. And then I had to find Richard Jackdaw's head in the pumpkins so that he'd tell me about how he died. Who on earth is Richard Jackdaw? He was a student here long ago. Anyway, he told me about a secret cavern. I went there, and right next to Jackdaw's skeleton, I found the missing pages. You found the pages? I did. And because Jackdaw had followed the map they contained, when I found the pages, I found the location on the map. Believe it or not, it's a room below Hogwarts. Why am I not surprised? Shall we? I was hoping you'd say that. Oh, and we'll need to bring the book. हाँ, बुक ले लीजिएगा प्रोफेसर फिग, क्योंकि अब मैप चैम्बर में हम लोग जा रहे हैं। The room is called the Map Chamber, by the way. And a portrait of Percival Rackham awaits us there. Professor Rackham. I look forward to meeting him. Confringo! How did this Jackdaw get the pages from the book? Evidently, Peeves stole them, and Jackdaw stole them from him. Oh, Peeves. अच्छा, पीप एक अकेला जादू मीन्स कोई भूत वगैरह है तो चीज़ें उठा सकता है। तो वो इंसान के टाइम पे उसने ये पेजेस निकाले होंगे। भूत भी है, जब अलग अलग है, चीज़ें भी उठा सकता है और वगैरह वगैरह। तो उसने पेजेस चुराए थे, और वही पेजेस बाद में रिचर्ड ने उसे चुरा लिए थे। To think it was beneath us all this time. This looks promising. मैप चैम्बर मैप दिखा रहा है कहीं का। पास में कुछ तो खतरनाक हुआ है जिसका कनेक्शन यहाँ पे जुड़ा रहा है। इन्होंने शायद कुछ बनाया होगा। There's Hogsmeade. And over here, the Forbidden Forest. And, of course, Hogwarts. It's magnificent. चारों पेंटिंग, चार अलग अलग प्रोफेसर्स की।
If only you were here to see this. ये आ गए Professor Rackham. Hello, Professor Rackham. We've placed the book on the pedestal as you asked. And this is my mentor, Professor Fig. How do you do, Professor Fig? And you, my young friend, see now why you needed to return with the book? I do. I also see why you refer to this room as the map chamber. That you have come this far tells me that you possess extraordinary magical ability, the potential and power of which will unlock should you prove yourself worthy. The location of each of 4 trials will, in time, appear on the map. Trials that will test you and give you access to invaluable knowledge. Trials that you must complete on your own. Do you recall the pensive memory you viewed in my vault in Gringotts? You and your friend Charles spoke of the port key and of trials you'd created for one who could see traces of ancient magic. Precisely. Charles is another of the Keepers, a designation we gave ourselves centuries ago, in light of the knowledge that we have been bound to keep hidden. Until, perhaps, now. So, the passage from your ruins to Gringotts, everything in the vault, the restricted section, finding this room, none of these was a trial. They were an important part of the journey, but they were not trials themselves. The fact that you have come this far, however, bodes well. The trials were designed to ensure that the power and knowledge we have kept secret for so long does not fall into the wrong hands. They will test your abilities, both innate and learned. But of equal importance, everything you witness as you complete the trials will inform what you choose to do with all that we share. You will need patience. The trials have much to teach you. It will take time. I'm afraid we don't have the luxury of time. We have waited this long, Professor Fig. Surely a few more. Respectfully, sir, while I do not know the secret you keep, I do know that our young friend here has seen traces. Traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. And we encountered an uncommonly powerful goblin wielding such magic as we prepared to leave your vault at Gringotts. We may already be too late. This is grave news, indeed. Young friend, do you trust Professor Fig? I do. Then, in the light of your considerable skill and all you have already accomplished, we shall begin. You will find the location of the first trial marked on the map below you. Whilst Professor Fig may assist you in locating the trials, they may be completed only by one with our ability. Shall we have a look? I know that tower. It's not far. You may have seen it yourself. It looks familiar. Perhaps your young friend is more well-traveled than you might think. As your mentor, the least I can do is go ahead to make sure it is safe. Join me as soon as you can. I'll find you at the tower as soon as I can. Until then, be careful. And do not tell anyone where you're going. Okay, Professor Fig. So map chambers अब इनको भी कह दिया कि कोई डार्क मैजिक काफी ज़्यादा पावरफुल डार्क मैजिक बिल्ड करता है और उसे हमें फर्स्ट लोकेशन मिली है जो यहाँ पे एक टावर था हमने क्विडिच बीच के पास ही देखा था वहाँ से थोड़ी दूरी पर ही है पर वो टावर हमारी काफी हेल्प करता है It's time you learned, Glacius, the freezing spell. It is an efficient way to cool down a heated situation. But first, I will need you to complete a few tasks. Once you've done that, come and see me. Okay, तो मेरे पास टास्क की भरमार आ चुकी है मैडम द डार्क ड्रिंक की चलो venomous stingulate and maggot on multiple enemies simultaneously. Acquire and use Manucare and Venomous. मेरे पास भी खादी मुझे स्लॉट नया खोलूँ या फिर
डिफेंस बोलो या फिर रिवेल्यू, डार्क आर्ट में अब जाना तो पड़ेगा। नेक्स्ट 16 और इसके लिए मुझे क्वाइट एबिलिटी चाहिए। हाँ ये ले लो। इन्वेंट्री में देखो आपके पास मेरे पास नहीं है, मेडोरॉक नहीं है, ये है एक्वायर करना है और यूज करना है। फिर पॉप बलून ओवर हॉग्समीड स्टेशन, पॉप बलून अराउंड द ब्रिज बीच, पॉप करना है। क्वाइट इजी टास्क। मुझे वैसे भी चाहिए, खतरनाक वाला चाहिए, तो वेव पॉइंट यहाँ पर रखता हूँ। जाके मैं एक मॉडक और 2 प्लांट्स एक्वायर कर लेता हूँ, मेरे पास पैसे थोड़े, इसमें एक एक एक्वायर भी हो जाएगा और फिर एनिमीज पे यूज़ भी करना है तो यूज़ भी मैं कर लूँगा। वो प्लांट्स के लिए मुझे बेसिकली यहाँ पे ही आना पड़ रहा था। प्लांट्स आप लोगों को डेंजरस प्लांट्स मीन्स चाइनीज पंपकिन। My young friend. कॉन्फ्रिंगो बहुत ही डेंजरस है और ये स्पेल आपको आनी नहीं चाहिए। फिर सिखाएगा नहीं कोई क्योंकि बैन की है, स्कूल्स में बैन है, ये सिखानी नहीं है। 5 पेज बचे हॉग्समीड के। Welcome. Come on in, come on in. Oh, not so fast. You need to tread carefully in here. Venomous tentacula. Oh, I'm always thrilled when a young one makes a wise purchase. I can tell you'll go far. Oh, I'm always thrilled when a young one makes a wise purchase. I can tell you'll go far. दोनों एक्वायर भी हो गए। चलो and use venomous multiple enemies simultaneously। एक्वायर हो गया है। एक गेट है। भाई साहब डार्क आर्ट वाले भी बहुत डेंजरस वाले मुझे दिखे हैं। Pop out the balloons। तेरी एक तो देखते नहीं है ना, मुझे इनकी बॉर्डर से बाहर निकलना होगा। फिर क्वेस्ट में जाओ और वो वाला मुझे किसी एनिमे पे यूज करना है तो करेंगे।
थोड़े से शायद एक नेक्स्ट एपिसोड तक मुझे मिस्टर बेटी का भी आ जाएगा कि नया ब्रूम अपडेट के लिए भी आ ही जाएगा मेरे पास। अराउंड क्विडिच चार हो गया, पांचवा की तरह। Enemies है, use turtle। ताकि सीखा ही जाए। Assignment's all finished. Stupid one. Potato. Stupid one. Revelio. Confringo. Depulso. Defendo. Incendio. Accio. Levioso. Depulso. Revelio. Levioso. Levioso. Incendio. Accio. भाई नीचे में इसकी बूस्ट अनलिमिटेड रह रही है, पर ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग किया जो हार्बोलॉजी क्लास से पहले और नया जो फ्रीजिंग स्पेल और नई ये कुछ सिखाएंगे एटन हार्बोलॉजी क्लास ड्यूरिंग द डे टाइम पे। सबसे पहले पेडिच ग्राउंड में जाके पेडिच में जाके मुझे वो बलून्स पॉप आउट करना, मुझे देख रहे हैं। Brilliant. मुझे उस तरफ से जाना होगा।
Revelio. मायूस मीना कहाँ है तू मीना मीना ए वो मेरा जादू बहुत ही ज्यादा पावरफुल भी हो रहा है, अपग्रेड भी हो रहा है। प्लस और भी चीजें सीख रहा हूँ मैं। Fifth to a bit. ओके क्लास में सिखा रहे ये अलग अलग चीजें। How wonderful. I've completed my assignments, Professor. Pleased to hear it. Professor Weasley will be too. I'll be sure to let her know how well you're coming along. Thank you, Professor. Professor Hecat tells me she taught you Levioso, so you should be ready for a more advanced levitation charm. Wingardium Leviosa requires a bit of concentration and a nice, graceful wand movement. Let's see you try your hand at it. When executed correctly, you should be able to pick up boulders as though they were sprigs of sneezewort. हाँ मैंने थोड़ा सा कर दिया। चल रहा Well done! ये क्या है? Leviosa and Wingardium. Wingardium Leviosa. You're a natural. Professor Garlick, a moment of your time? The plants are resting, so now's as good a time as any. I was wondering, what made you want to teach herbology? How lovely of you to ask. I've always had an affinity for greenery, so this situation is a bit of a dream come true. After graduation, I was thrilled to be asked to step in for my old herbology professor. He'd had a slight accident, you see. Oh dear. A shame for him, but it worked out well for you. Well, he never cared. Really cared for the plants, and they could sense it. Oh, you'd be surprised how perceptive a plant can be. At any rate, the trouble began one day when he cut into a wigan tree. Unfortunately for him, its leaves were hiding a bowtruckle. You may recall the marvelous creatures that resemble a twig. The little beast gouged the professor's eyes quite fiercely, but terrifying, I'd imagine. Likely for the professor, too. And that's when you took over as the herbology professor? Well, not quite. After 3 weeks at St. Mungo's, my predecessor regained a tiny bit of his eyesight. He insisted on returning to the greenhouse. Within a week, he claims by accident, kicked a Chinese chomping cabbage, so it was back to St. Mungo's for him. What a string of bad luck. Well, I felt awful for him, but I dare say I felt a bit more sympathy for the cabbage. Upon his discharge from the hospital, his indifference to plants had turned to utter disdain. He lost what little patience he had left with a particularly temperamental venomous tentacula and, well,
His resulting leave of absence continues to this day. I'm glad everything worked out as it did and that you're the herbology professor now. Very kind of you to say. I do love these gardens and helping my students grow. Lovely speaking with you. Have a wonderful day. Oh, and remember, be kind to your Wigan trees. Yes, Professor. Revelio. तो ये सीख लिया। मैडम कॉगवा, आप कहाँ पे है? मैडम कॉगवा बाहर ही है या फ्लाइंग क्लास के आसपास ही है? दैट्स गुड, दैट्स नाइस ऑफ देम कि वो मेरी हेल्प काफ़ी कर रही है। पोशंस और ये सारी चीज़ें सीख लिया। अब नया क्या है इसके अलावा? अब मेरे पोशन से चार्म क्लासेस मुझे नहीं आ रहे, डिफेंस सर्किट क्लास के नहीं दिख रहे, पोशन और ये अभी दिखा रहे हैं हर्बोलॉजी, तो मुझे अलग अलग स्पेल्स भी सिखा रहे हैं। पर और क्या? और इसके साथ यहाँ पे कुछ How did you get on with those tasks? यार ये मैम अकेली यहाँ पे रहती है। Madam Kagawa, I completed the list of tasks you assigned. Wonderful. I trust you became more familiar with your broom through the process? Yes, Professor. That's good to hear. Keep it up, and perhaps one day you'll have a spot on the Quidditch team. If Black ever permits Quidditch again. Well, with those tasks out of the way, let us get started. Glacius. Pay attention to your wand work. ग्लेसियोस फ्रीजिंग स्पेल किसी को भी जमा सकती है। Well done. I'd recommend that you practice your new spell here in my office before taking it out into the world. Glacius! There you go! Cinder! Hitting them quick! Repulsor! Incendio! सॉरी प्रोफेसर, इंसेंडियो यूज नहीं करता था। Glacius! I think it's learned its lesson, but do continue to practice. Kinesthesia is a powerful learning tool. Yeah, Professor, and thank you for this. आपने मेरी काफी हेल्प की। अब इसका भी देख लेते हैं। What are you doing out here? Challenging you to a game of Summoner's Court. I think it's time you faced a real opponent, outside of Ronan's little lesson in Charms class. Summoner's Court isn't just a game. It's a battle of skill. A test of a witch or wizard's mettle. What say? I'm in. Let's do it. Brilliant! Summoner's Court. The ever-changing game. Accio. All in the wrist. Accio. That was one for the ages. Accio. Try to beat that. हटी, ले ले बीट कर दिया। एज पे आके बस रुक जा, अब कुछ नहीं हुआ सही। Not bad. Not bad. Accio. कर दी ना। दिमाग में 100 दोनों के। Accio. 10 उसके और 30
मेरे Merlin's pants! Well done. You beat me. 20 मेरे को और 10 उसके चले गए ओह भाई Bit of good luck, that's all. Come now, Leander. There's no need for that. Fine, you're good. Better than I am, at least. I'll let the others know you're good enough to keep playing. The others? I lost 7 matches in a row to Samantha Dale. The others who play Summoner's Court thought that if you couldn't beat me, you wouldn't be enough of a challenge. Chin up, Leander. Keep practicing and you'll get better. I suppose you're right. I'll let the others know that your metal's been tested, and that you passed. Thank you, bro. भाई मैं पास हो चुका हूँ कंप्लीट साइड एंड रिलेशनशिप क्वेस्ट और सब में अच्छा ही रहा हूँ मैं बेसिकली मैंने अच्छा ही दिखाई है मैं फाइट करके रिलेशन बिगाड़ सकता हूँ या फिर नहीं रिलेशन बिगाड़ना क्यों है डिटेलियन की टेक्निक प्रोफेसर फिक्स से भी कुछ है नहीं अब नया कुछ नहीं है मेरे पास इस वक्त ऑब्वियस स्पेस भी मेरी बढ़ गई है पर मैंने यूज़ ही नहीं किया बहुत ही यार नाइस इट्स गुड ये वाला quite off to a good thing. So new broomsticks भी आ चुकी है और इस लेवल भी मेरा काफी बड़ा है नॉर्मल सा एक मिला है अच्छा है और ये पूरा एक सेट खुल रहा है ये पूरा सेट जब मेन पीस का अनलॉक होगा तब ये मैं फाइनल बैटल में पहनूंगा और ड्यूलिंग का भी खोल ही रहा है बढ़ रहा है काफ़ी अच्छे से मेरी जो है उसकी हाँ उससे थोड़ा काफ़ी क्वाइट डिफरेंट है भाई मैं इसको निम्बस 2000 मानता हूँ सबसे महंगी वाली भाई अनियोली ब्रूम विथ इम्प्रेसिव स्टाइल यूज़ करते हैं पूरे टाइम ये चैंपियन वैम्पियन का छोड़ो ये लगाओ प्रोफेसर बिग वो टावर पे है एक सेकंड वो टावर पे वो है मुझे लगा ये वाला होगा वो दूर वाला है तो quite a good thing
मेरे पास 300 ही है। एक काम करते हैं, अपने चेम्बर में जाता हूँ मैं एंड वहीं पे जाके थोड़ा सा और चीज़ करेंगे और फिर जैसे नेक्स्ट अपग्रेड आएगा ना तो मुझे टेस्ट करना है। पाँच दोनों मिल गए। यहाँ पे देखो 15 हम प्लम्स है और ये 6 है मेरे पास अभी मून फ्लावर प्योर मून ग्रिल मून ग्रेल प्योर और ये वाली बोटल्स भी मेरे पास वो एक आध तो पड़ी है, काफ़ी है वो। हाँ एक पड़ी है, एक बैटल में चल जाएगा। हाँ ज़रूरत पड़ने पर मैं इस्तेमाल करता हूँ, पर ज़्यादा देर ऐसे ही नहीं यूज़ करता हूँ। इनविजिबिलिटी एक ही बना सकता, फ्लेक्सियस नहीं। सुरालेजिस फ्रूट मैं नहीं बना सकता, मेरे पास नहीं है यार। Deke thinks you are doing good work here. गलती। अब मुझे पोशन में 14 में दिखाओ। स्मॉल विथ 5 स्मॉल साइंटिफिक पॉटिक टेबल विथ 3 स्मॉल पॉट्स। इलेक्ट्रिक डॉटिक, इसमें एक खुलूंगा तो अपने आप ही खुल जाएगा ना। मीडियम और लार्ज, हाँ लार्ज वाले मुझे भी चाहिए। एक लार्ज पॉइंट पॉट्स जहाँ पे 2 लगा सकूँ। स्मॉल में 3 वाला तो चाहिए एटलीस्ट। मीडियम पॉट और बड़े में, क्योंकि इसमें प्लांट्स अलग अलग तरह के हैं आपके पास, मैं आपको दिखाऊँ तो कंसीडरिंग ये सारे प्लांट्स अलग है। और वाइटर लेते हैं, वाइट अप बिट लेते हैं। ये 7 मिनट का अभी मैंने यूज़ कर दिया इसकी। और नथिंग इज न्यू कमिंग, अभी तो नया कुछ आया नहीं है यार। पोर्ट्रेट भी है और स्टैचूज भी है और टेबल भी वही है। कारपेट एक नया आया था वो मैंने लगा दिया है। सोफा में ये चेयर मुझे खुली नहीं है, वरना मैं करता कुछ। How would you like to learn the knockback jinx flipendo? Once you've completed the necessary tasks, come and find me in the greenhouse. Hey, grow and harvest looks bad. Acquire all 3 combat plant and use simultaneously. Acquire all 3. अब यार पैसे नहीं है, ये है और ये नहीं है। मैन ग्रू
फ्लक्स वेट भी कहाँ से लाओ? लार्ज प्लांटेशन चाहिए, मीडियम, इसके लिए स्मॉल चाहिए, तो यहाँ पे एक स्मॉल वाला टेबल रहेगा, फिर मीडियम वाला भी मैं देखूंगा, स्मॉल विथ 5 स्मॉल वाला हो सारी चीज़ों में अलग अलग हो। यहाँ पे भी वही आएगा यार, प्लांटेशन का भी मुझे ये स्टैचू निकालना पड़ेगा बाद में इन जीड फ्यूचर में, और इसका भी I don't देखेंगे have कुछ। anything for this at the moment. ये पूरा एरिया मेरा मेन चेम्बर का, मेरा सब कुछ काम करने का होगा, और वहाँ पे डेकोरेशन का मैं डाल दूंगा। Acquire all 3 compact plant and use them simultaneously. एक में से 2 निकलते हैं भाई साहब, अच्छा है। Go and harvest flux अब ये फ्लक्स पैड में मैम लार्ज प्लांट है, लार्ज प्लांट, फ्लक्स पैड इज अ लार्ज प्लांट। फ्लक्स पैड की मेरे पास सीड भी शायद ही है। फ्लक्स पैड के चलो सीड है, 15 मिनट लगेंगे, पर इनकरेक्ट पॉट साइज मेरे पास नहीं है। मुझे अभी जाना पड़ेगा हॉग्समीड में, जाके देखना पड़ेगा। हॉग्समीड में लार्ज पॉटिंग साइज मुझे चाहिए, लार्ज वाला, लार्ज पॉट, मीडियम पॉट वाला भी एक चाहिए, और एक लार्ज वाला, दोनों चाहिए। Imagine how inconvenient travel was before I invented. तो मुझे काफ़ी डार्क फॉरेस्ट में घूमना पड़ेगा। मैं साइड में बैठ के पैसे कमा रहा हूँ अभी। Hello there. Come on in. Plenty to look at here. सौ है अबे पॉटिंग टेबल, 3 मीडियम पॉट, 3000। पॉटिंग टेबल विद 2 मीडियम पॉट स्पेल क्राफ्ट, हाँ 1700, 750, 5000। स्मॉल पॉटिंग टेबल, स्मॉल वाले तो है, चलो वो मैं 2 लगा लूँगा। हॉपिंग वाला भी नहीं है, मटेरियल रिफाइनरी नहीं है। पॉटिंग टेबल विथ अ लार्ज पॉट, पॉटिंग टेबल विथ अ लार्ज पॉट स्पेल क्राफ्ट, इसके लिए 1000 चाहिए। 2 लार्ज, जो लार्ज वाले पे एटलीस्ट एक पॉटिंग टेबल लार्ज वाला बाय कर लूँ ना, 3000 का आएगा। 1000 का ले लूँ, 2 लगा दूंगा मैं, क्या है कि क्या, हाँ चलो ये हो जाएगा। 1000 इसके लिए निकाल दूँ, मैं कहीं से ले आऊँगा। 700 चाहिए। फिर मीडियम के लिए 750 विथ मीडियम, स्मॉल एक ही आएगा, 2 वैसा लगा। मीडियम में लार्ज पॉटिंग टेबल 1000 है, 3000 इसके लिए करना होगा, और बाकियों के लिए देखना पड़ेगा। Let me know if there's anything else I can. Arresto momentum, the slowing 2 charm. 3 It allows you to freeze objects or people in 3 midair. Simply complete a few tasks and then come and see me. मीडियम पोशन स्टेशन स्पेलक्राफ्ट, टी शेप वाला मुझे चाहिए। 2 3 3 और 3 6 और 2 7 8 और 5 पॉटिंग टेबल स्मॉल वाले भी चाहिए मुझे। तो उसमें है ये वाला ले लूँ, तो 3 में आराम से अभी क्राफ्ट अभी मैं 3 ही कर सकता हूँ यार। बेसिक स्मॉल में 3 ही चाहिए, तीनों एक एक लगा लूँगा, तो 400 उसके। Let me know if there's anything else I can do to help. हाँ ये लो, स्मॉल विथ बीच का तो मैं देखूंगा। Nothing like finding just the right thing, is there? तो आज का एपिसोड यहीं पे अंत करते हैं, और मैं थोड़े से फ्लक्स वर्ड के सीड्स है
तो मैं एक साइमल्टेनियसली यूज करना है, मुझे एक और प्लांट चाहिए मेरे पास। 100 रुपए में जान निकाल लो आप यार। हम मैडम कोकोआल का भी है, फ्लाई नियर द स्पैरियस एंड ड्रिंक्स यू एरिस्टो मूवमेंट लिपेंडो। अब ये सारे मूव्स मुझे सिखा रहे हैं। एरिस्टो मूवमेंट एंड फ्लिपेंडो ये सिखा, पर्पल वाले मैम सिखा रहे हैं। और ये Revelio. चंदा दे दो यार, चंदा दे दो मेरे को भाई, चंदा दो। Careful of the mandrakes. I haven't fed them yet. 160 हुए। चलो 500 का तो आता है भाई, 500 का आता है, मैं कहाँ से लाऊं? Doors always open. You be sure to stop by और soon. आखिरी वाला ये निकाल दिया, कम वाला भी। अब मुझे पैसे बहुत सारे चाहिए, इसका भी उगाना पड़ेगा, ये भी उगाना पड़ेगा, ये चलो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय गाइस। मैं अब बैठ के 10,000 जमा करता हूँ और सब्जी के लिए पोटेशियम लेके आता हूँ, लेके फिट करके मिलता है सीधा। Revelio. यार बुक का पेज नहीं मिला था, दिखा था और गायब हो गया। कोई बात नहीं, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।